So in this question they are asking under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed. ठीक है. So they are talking with respect to average velocity and average speed. So basically if you're talking about average velocity, ठीक है, if I check with average velocity, तो ये क्या होगा? It will be nothing but total displacement, right? It will be nothing but the total displacement upon what? Total time. Same thing if I check with respect to average speed, ठीक है, कि average speed जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो कैन आई से ये मेरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, राइट? सो इफ आई कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है. सो इफ एनी इंस्टेंसेस कम जहां पे डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि भाई एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू व्हाट? एवरेज स्पीड. So how to answer this? You are supposed to answer in such a manner. Average speed is nothing but total path travel in that time, while average velocity is the total displacement in time. So the magnitude of average velocity and average speed will be same if the distance is equal to what? Displacement. Okay. So I hope this answers your question. Thank you.